Clip talk. Whatever. Okay, today we have to speak on verse number 23, बराबर? जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिव यजमान मदपुमान. Okay. हिंदी. And I see the for me I see the Sanskrit word ना, तो यहाँ पे 23 6 उल्टा 3 6 याद. That's a tragedy with me. Okay. Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our Saturday evening Bhagavatam class. So we are doing our Kunti Stuti and we have completed up to verse number 24. So 1.8.25 has been completed. So we will start from 26. So before we start, let's have a fast recap so that we brush up our memory. 1 week is a long time for us to forget. Yes. What was discussed in the last time? Last week, what did we discuss? Kunti Maharaj is asking to Krishna that all the challenges should come again and again so that she can remember Krishna. That was not discussed. The discussion was on Sharanagati. Surrender. What is actual surrender? What is the definition of surrender? शरणागति का असली मतलब क्या है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया. Various forms of things which we have discussed. Today, again, she is saying, जन्म ऐश्वरी श्रुति श्रीवी एवमान मदपुमान नैव हत्या अभिघातुंगे त्वाम अकिंचन गोचरा. यहाँ पे कुंती महारानी सिंह जिनके पास ये 4 चीजें हैं, क्या क्या है? माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप कैन नेवर बी अप्रोच्ड but only by those who are materially exhausted. One who is on the path of material progress, trying to improve himself with a respectable parentage, great opulence, high education, and bodily beauty cannot approach you. You with sincere feeling. So एक यहाँ पे डिक्लेमर डाल रहे हैं. कुंती महारानी इस पुटिंग एक डिक्लेमर कि जिसके पास जन्म है, जन्म मतलब अच्छे खानदान में, बड़े खानदान में, प्रेस्टिजियस हाउस में, मतलब खानदानी घर में पैदा होता है ना, वो व्यक्ति के अंदर या what do you say, born with a golden spoon, that's the right word, born with a golden spoon. वो व्यक्ति के वहां पे आपको जन्म लेने वाला व्यक्ति, उसके अंदर वेरी लेस चांसेस. अगर उसने भक्ति किया भी ना तो इट विल बी अ शो ऑफ डिवोशन रादर देन actual devotion. He will just because it's a fashion, everyone is going, चलो मैं भी मंदिर जाता हूँ. That's why we see people coming to the temple with funny dresses. काफी जगह पे हम मंदिर में देखते हैं कि लोग ना कम शॉर्ट्स से कम पहन नहीं सकते हैं बेचारे, and they come as if they are gone to some friend's house or something. पूछेंगे तो बोले भगवान तो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं. Would you go to meet a great personality in that way? Would you go to office in that dress? क्या आप ऑफिस में उस कपड़े में जाते हो? You are seeing that you are well decked up. Similarly, when you are coming to meet the supreme personality of Godhead, is it not necessary that we should come in a proper etiquette, proper dress style? पर क्या होता है? जन्म, ऐश्वर्य, जिसके पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, ऐश्वर्य, जन्म ऐश्वर्य. श्रुति, श्रुति मतलब ज्ञान, नॉलेज. मैं साइंटिस्ट हूं, आई एम इसरो साइंटिस्ट, आई एम नासा साइंटिस्ट, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, आई एम बिग लॉयर, दिस दैट. ये जो ये सब इसको क्या बोलते हैं? कुंती महारानी से ये मद है, इंटॉक्सिकेटिंग, दिस इंटॉक्सिकेट्स ए पर्सन.
अहंकार एक मद आ जाता है। मद मतलब अहंकार, और एक तरह से इट्स एन इंटॉक्सिकेशन। अपने आप को आई एम अबाउट द रेस्ट, मैं सामान्य मनुष्य नहीं है, सुप्रीम हूं, आई एम अबाउट द सुप्रीम। So, yes, you are right. They consider themselves above the Lord also. So, that happens. See, these things go inside the head. So, Janma, Aishwarya, Shruti and Shri. Shri. यहाँ पे Shri means money. But if you see, Lakshmi दो तरह के लोगों के पास होता है. One who are actually rich, खानदानी अमीर. गर्भश्री, हाँ, गर्भश्री, गर्भश्रीमान, आई डोंट नो, वो जो घराने से पैसेवर है. एंड सेकेंड वन इज फास्ट मनी, सडन मनी, दैट इज मोस्ट डेंजरस. जिसके पास सडन मनी आ जाता है, फास्ट मनी आ जाता है, ही थिंक्स बस अब भगवान पूरी दुनिया मेरे मुट्ठी में है, मेरे बस में है, मेरे जेब में है, एंड आई एम द किंग. तो मैं पैसा फेंकूंगा, सब कुछ हो जाएगा, यहां तक मैं भगवान को भी खरीद सकता हूं. दीज आर द फोर डिक्लेमर्स. व्हाट शी सेज, त्वम अकिंचन गोचर. व्हाट डज दिस मीन, त्वम अकिंचन गोचर? अकिंचन मतलब जिसके पास पैसा ही नहीं, या जिसके पास एकदम अकिंचन है, मतलब बहुत फॉलन है, बहुत बुरा हालत है उसका. त्वम अकिंचन गोचर, तू उसके ही है. So does that mean Lord is only for beggars? आज तो कोई बेगर आया मंदिर में भगवान से मिलने. So what does actually Kunti Maharani, what is she trying to tell us? What message is she trying to give us? She is saying कि भाई जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री एदमान मध पुमान, ये लोग अपना मद चढ़ जाता है उनके सिर पर. तो ये लोग आपके शरण में आने के लिए या तो संकोच करेंगे, पहले चीज तो आएंगे नहीं, और आ भी गए तो भी इट शुड बी जस्ट पार्शियल, नॉट फुल सरेंडर. बट फाइनली शी सेज, तो हम अकिंचन गोचर, जो अकिंचन है वो तुम्हारे पास आके शरण में, वी कैन अप्रोच यू मच इजीली. व्हाट इज एक्चुअली शी इज ट्राइंग टू से, जो एक समझो एक हाथ गाड़ी वाला है जो रोज कमाता है खाता है, और उसके बाद जाके आप लोग में से कोई गया, बोला नहीं प्रभु जी आपको हम भगवत गीता सिखाते हैं, आप आत्मा नहीं आप शरीर हो, शरीर नहीं आप आत्मा हो, ये हो वो हो, सब उल्टा पुल्टा सब ज्ञान सिखा दिया आपने उसको. वो क्या बोलेगा, रहने देना साहब, हमको तो रोज सुबह कुआं खोद के पानी पीना. सो will you even ever think of spending some time in devotion? Will you ever think of spending some time also? You may have in the corner of the heart even a desire, but will you be practical? You will be able to come? Possible नहीं है, वो नहीं आ पाएगा, क्यों? उसका रोज का रोज काम करना है उसको. So Lord is no, Kunti Maharani is not saying that कि भाई you are for the impoverish. She is not saying that. वो कह रही हैं कि जो सोचते हैं ये सब भगवान का है, ये मेरा नहीं है, वो व्यक्ति वाकई में अकिंचन है. ये सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ उनका दिया हुआ है, एंड जब तक है ठीक है, तो उसके बाद मुझे तो इस दुनिया में रहना ही नहीं है, मैं तो लेके नहीं जा सकता हूं. तो व्हाई शुड आई बी प्राउड अबाउट इट? किसके बारे में घमंड किसका करो? आज है कल नहीं भी हो सकता, ज्यादा वक्त नहीं लगता है, चाहे वो पैसा हो, श्रुति हो, ज्ञान हो, जो भी जिस चीज का व्यक्ति घमंड करे. कोई खूबसूरती का घमंड करता, अरे खूबसूरती कितना जवानी कितने दिन की रहेगी, वन डे अगर कितना भी बोटॉक्स का इंजेक्शन कर लो, कितना भी आप प्लास्टिक सर्जरी कर लो, बट बियॉन्ड अ लेवल यू मे मेक योर स्किन लुक नाइस, but you can't change your internal organs. What happened to Michael Jackson? He wanted to live for 150 years. He had around 14 or 15 doctors, 24 hours in his house, and an entire hospital set up with all oxygen mask, oxygen supply, and this and that
full functioning operation theater. He said मुझे कुछ नहीं होना चाहिए. ये donors, 10 donors ready. मतलब उसका लिवर, उसके लिए लिवर दे देंगे, लंग्स दे देंगे, मतलब दोनों को ऑर्गन देने को तैयार बैठे थे. फिर भी he could not live more than 50 years. Earliest he died. And none of the donors, none of the doctors could save him. How many of you know about Walt Disney? कितने लोग जानते हैं वॉल्ट डिस्नी के बारे में? सुना है? मिकी माउस, very famous category character like Mickey Mouse and Donald Duck. The actual fact about Walt Disney was he never wanted to die. He made the Disney World in US, right? He never wanted to die. वो कभी नहीं मरना चाहते थे. He had told the scientist, he had caught hold of scientist, तुम ऐसा कुछ दवाई बनाओ जिससे मैं अमर हो जाओ, लंबा आयु रहना, मुझे मरना नहीं. I will not die. There is a movie which has come out. I forgot the name of the movie. It's a true English movie. You will get a chance, watch that movie. It's not that I am propagating you to watch movie, but it gives you a lesson of what life is. So he gave millions of dollars to the scientist. बस ऐसे अब फॉर्मूला अभी रेडी है, केमिकल अब रेडी है, दवाई अब रेडी है, आपको दे देंगे तो आप मरोगे नहीं, ये वो करके. तो ये सब सुन के जब साइंटिस्ट बोल रहे थे, उसके रिश्तेदार जो थे वो डर गए कि इसके अरबों खरबों का पैसा कब आएगा हमारा. अगर ये अमर हो गया तो हमारे हाथ में तो लगेगा नहीं पैसा. दे millions of dollars to the scientist, not to make. The scientist made money. The scientist made money from both the sides. It's a true fact. Google it. It's a true fact. And finally what happened? दोनों साइड से डॉक्टर्स ने ये बनाया, and the last minute he was literally dancing on the bed, literally fighting, fighting for surviving. He didn't want to die, but finally he had to. Point is, death is inevitable. जो व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है, हाँ, डेथ इज इनएविटेबल फॉर मी, आज नहीं तो कल मुझे उस मौत के दरवाजे पे जाना ही है, मैं अमर नहीं हूं, हाँ किसी और से मैं थोड़ा लंबा आयु रह सकता है मेरा. एंड अगर बहुत लंबा भी आयु हुआ ना, वो भी एक श्राप है. इट इज टू लॉन्ग एन एज, इट्स अ श्राप. बाय डिपेंडिंग ऑन एवरीथिंग. फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर आल्सो यू हैव टू डिपेंड. You are lying on a bed of urine and stool. Nobody is there to take care of you, and everyone is praying, भगवान उठा ले उसको, भगवान उठा ले उसको. इसके लिए ऐसा व्यक्ति जो मरते हैं ना, घर वाले, हाँ उनको मोक्ष मिल गया. एक्चुअली उसको नहीं, उनको मोक्ष मिल गया. They are so excited to say because उनको मुक्ति मिल गई. जो मरे उनको मुक्ति मिले ना मिले, हमको तो उनकी सेवा से मुक्ति मिल गई. That is why they jump. So that is why impoverishedness means what? One who does not considering whatever he possesses. Whatever you have, whatever you possess, you are supposed to put it in the service of the Lord. भगवान की सेवा में डालना है. जो भी है भगवान की सेवा में. A very famous sage, name of Krishnadas. He used to, whatever he used to see, he would like to offer it to God. भगवान को अर्पित करना उनका बहुत मतलब प्यार था उनको, या उनका एक शौक था, पास्ट टाइम था. So once what Krishnadas was doing, he was moving around. He saw nice jalebi in Agra. Okay, he saw nice jalebis made in Agra. तो बोला जलेबी ये मेरे ठाकुर जी को ऑफर करूं तो. और ये कौन से ठाकुर जी उनके श्रीनाथ जी. तभी श्रीनाथ जी गोवर्धन में ऊपर था, गए नहीं थे श्रीनाथ जी, वहां राजस्थान में गए थे. तो बहुत इच्छा थी कि भाई भगवान को जलेबी खिलाओ. वो जब भी कोई अच्छी चीज देखते ना, तो भगवान को ऑफर करने के बारे में सोचते. Used to always feel like offering it to God. So saw a nice jalebis. He said, चलो कल सुबह मैं भगवान को
जलेबी ऑफर करो। जाते जाते सब सामग्री लेके गए, शक्कर मैदा जो भी लगता है सब सामग्री सब लेके गए, बोले अभी भगवान को बना के खिलाओ। He carried everything, he went up to the top of the Govardhan Parvat, and when the kapat was opened, the parda was opened, there he saw भगवान के हाथ में जलेबी। मन से ऑफर करने का सोचा तो भगवान बोले डोंट वरी, आई एम ऑलरेडी हैविंग जलेबी। The minute he saw the jalebi got transferred from there to Lord's hand. And the best part of it is, one day he was moving around in Agra. देखा काफी भीड़ लगी हुई है, क्यों किस चीज की भीड़ लगी है देखो इनसे सही जाकर। वह देखा तो वहां पे एक वेश्या नाच रही थी, and she was very very beautiful. This prostitute was very very beautiful, and she was dancing very nicely and singing very nicely. He said he was also attracted. And you say, Prabhuji, what is this? So holy person supposed to be attracted? He was not attracted in enjoying it for himself. He said, this beautiful face, with this beautiful voice, and with this beautiful dance should be for the Lord. उसने जाके वेश्या को पूछा, भाई will you please come and dance in front of my boss? उसने क्या बोला, सेठ जी के सामने आके कब नाचोगे क्या? बोला अरे यहाँ से वहां तक आऊंगी तो खर्चा लगेगा। डोंट वरी, उस जमाने में ही जो 100 रुपीज, बोला 100 रुपया रखो पेशगी एडवांस। बोले वाह, ये नौकर 100 रुपया दे रहे तो सेठ कितना देगा, उसका सेठ कितना बड़ा सेठ रहेगा। तो हाँ बोली आ जा। अगला दिन सुबह आ गई, लेके गए ऊपर, मंदिर तक ऊपर लेके। बोले कहाँ है तुम्हारे सेठ, कहाँ है तुम्हारे सेठ, मैं देखना चाहते हैं तुम्हारे सेठ। एंड नाउ आफ्टर सीइंग दैट मनी, इट वाज देयर इन हर माइंड कि जैसे वो आएंगे बाहर, आई मीन उसके सेठ आएंगे, उनको रिझाऊंगी, इतना अच्छा गाऊंगी, इतना अच्छा नाचूंगी, इतना अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दूंगी कि वो सेठ खुश होके जिंदगी भर का कमाई दे देगा। मतलब आई लर्न फॉर माई होल लाइफ टाइम। यहाँ भगवान का कपाट बंद है एंड सब लोग बैठे हैं। बोले सेठ जी की बस पर्दे के पीछे आएंगे, अभी पर्दे के पीछे है, अभी पर्दा खुलेगा, आप सेठ जी का दर्शन कर लेना, मिल लेना। एंड इन द हार्ट ऑफ हार्ट शी इज कॉन्टेम्पलेटिंग सो मेनी थिंग्स। फाइनली पर्दा खुल गया। The Vishya saw the Lord and he went and stood in the corner. Prabhu, I have bought this for you. Definitely, would anyone get this, such a thing for the Lord? But that's the bhav. For him, everything, whatever you have, whatever he sees good, he sees nice, it is for my Lord. And that is when Lord interacts with such people. And he was quietly standing. The Lord saw her. And when she saw the Lord, for a split second, she felt so nice. Krishna is so beautiful. This Lord is, Srinathji is so beautiful. Already he is dancing. With one hand he is on his hip, and other hand is on the raised hand. So he is dancing. So she got attracted. She said, I want to offer. But neither could she sing. कुछ भी नहीं है निकला, उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। मतलब इतना सोच के रखा था मैं ऐसा नाचूंगी, ऐसे गाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, but nothing came out of her mouth. And for a split second she thought, what can I offer to this person? This body is already impure, contaminated. This is enjoyed by so many men. How can I offer this body to God? I wish I could, enter into God's kingdom and entertain him. So thinking, she said, this body is impure, I should leave this body. She died. At that very moment, she died. And जो उधर के महंत जो थे वल्लभाचार्य, that time वल्लभाचार्य was in Govardhan taking care of Srinathji. वल्लभाचार्य that day night in his dream, that's why these personalities, why they are great, they enter into the Lord's pastimes. They got entry into the pastimes. Because we dream about
all material things. We don't think about, dream about neither the God, neither the leaders of the God. But he was dreaming about that. So he entered into the pastimes, he was entered. And there, in the Ras Leela, that day night, he saw that very same prostitute dancing with the gopis in the Ras Leela. So if one has an intention of offering something to God, the intent will, Lord will accept it. And such a person like Vallabhacharya and could see that. And Krishna was such a great devotee. Immediately offered and Lord accepted her also. That is what is actually impoverished. He never said, no, 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 I should enjoy this prostitute, I should see her dance, I should listen to her song, I should enjoy her body. No, his only thought process was, even if it's a prostitute, I have to present it to the Lord. It is for the enjoyment of the Lord. That is what is the difference between us and great personalities. Great personalities always think, हम लोग के पास अगर थोड़ा कुछ आ जाता है, little beauty, little money. No, Lord is full of 6 opulences. What are the 6 opulences? Lord is full of? हाँ. फिर? हाँ. सब टुकड़े टुकड़े में है. गुरुपान, बलवान, धनवान, ज्ञानवान, ऐश्वर्यवान, वैराग्यवान. 6 wands are there. Always remember, रूप में, धन में, और हम लोग में से he is that all got all this in fullness. रूपवान, धनवान, ज्ञानवान, ऐश्वर्यवान, बलवान एंड वैराग्यवान. सब थोड़ा थोड़ा. और हम लोग के अंदर कोई भी एक चीज थोड़ा सा आ जाए, 1% भी आ गया, माय गॉड, पूरी दुनिया को नचाते हैं. कम से कम घर को तो नचाते ही नचाते. हाँ, रहती है जो पृथ्वी में पैर रहती है, और सर सातों आसमान में घूम रहा है. दैट इज द प्रॉब्लम. And that is why she says, first she told about Sharanagati, and then she is saying this. And this is also part of Sharanagati. This is also part of Sharanagati. I was discussing, I wanted to discuss. Let's see if today we can discuss this a little. हाँ. Who is impoverished? Who is impoverished? उसमें प्रभु जी, जैसे हम लोग भी ऐसा फील करते हैं कि भाई एवरीथिंग इज ऑफ लॉर्ड, बट कभी कुछ अपने को मिलता है तो उससे आसक्ति जुड़ जाती है. So how do we manage that? That is what we are under training, no? We are under training. A person who is, see, what's the difference between an untrained person and a trained person? Like, for example, an electrician, he knows he will touch a live wire also, he will not get shocked. But you and I will get a shock because we are not trained to handle that. Okay. I still remember, whenever I see doctors, the first thing they see is blood. And 90, at least I know n number of people, the minute they see blood, they faint. Just imagine a doctor cuts and he faints. So it's a part of training. It's not, it doesn't come on the very first day. Definitely on the first day, even his hands and legs will show. No, seeing a live person being cut and the blood oozing out and everything. But then, in due course of time, you practice and you become the same. But the focus should be that. That should be the end goal. And then you reach to that level. So, we go to Hari Bhakti Vilas. There's a beautiful shloka which says, Anukulyasya sankalpa pratikulasya varjanam. Rakshati isi vishwaso गोत्रप्तेन वारणः आत्मशेप कार्पण्यः षड्विधि शरणागति. These are the 6 type symptoms of surrender. क्या क्या है? First, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम. What is favorable for devotion, accept. What is not favorable for devotion, reject.
जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो ले लो, जो प्रतिकूल है वो छोड़ दो। रक्षति थी विश्वासो, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, इस चीज पे आपको विश्वास होना चाहिए। That faith should be there. I mean, we'll discuss in detail, but I'm just giving a outlook of it. Then, go triptena varanaha. Here, to maintain an attitude of gratitude towards God. भगवान आपने जो भी दिया है, मेरी लायकियत नहीं है, वो मेरी लायकियत से ज्यादा दिया। और हम लोग कैसा मनी मन गाना का तो गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण, और अपना एक्चुअली ना, एक्चुअली मन में क्या भाव रहता है ना, तेरा कुछ नहीं लागे सब कुछ मेरा सब कुछ लागे है मेरा, मेरा मुझको दे दे। दैट्स अ भाव, बिकॉज व्हेनेवर यू गो टू द टेंपल एंड समवन इज पुशिंग शिट God, me, don't see them, just see me and give me my, and we ask for only one thing we know to ask maximum, हाँ शादी करा दो, फैक्ट्री बढ़ा दो, धंधा बढ़ा दो, बच्चे हो जाए, बस बच्चे की शादी हो जाए, बस ये इतना घुमा करेंगे, बस इसी 5 चीजों में ही हमारा मांगने का कार्यक्रम चलता रहता। कोई जाके बोलते भगवान मृत्यु से बचाओ मुझे, मृत्यु से बचाओ। अच्छा बचा भी दिया, क्यों बचना है? और भोगना है, इसके लिए मुझे बचना है। इफ समवन वांट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम डेथ, इट इज फॉर एंजॉयिंग मोर, इट इज नॉट दैट ओ ठीक है ना। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कमिंग टू सत्संग? सत्संग में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? मरने से डरने लगेगा। वेरी गुड, वेरी नाइस पॉइंट। मतलब तो मुझे इतना बोल दिया अपने, हम मरना है, मुझे मरना है। That is one thing, very nice. But Acharya say one step ahead. They say, अगर सत्संग में अटेंड कर लिया तो आपने मृत्यु का सत्य जान लिया, और एक बार मृत्यु का सत्य जान लिया, then it is like भगवान से आपका शादी हो गई, बट गौना नहीं हुआ। At the time of death आपका it's true, right? How many of us really eagerly wait to die? I want to die. तो परेशानियों से मरने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा। Unless you don't die, you don't go back to the God's kingdom. Correct? You are stuck in this world itself. वहां अगर जाना है तो आपको कुछ ना कुछ what do you say, efforts लेना पड़ेगा। So that's why आचार्य से don't worry, सत्संग means भगवान से शादी हो गई, मृत्यु मतलब गौना, और कुछ नहीं है। At the time of death you are going back to God. But the problem is we people are having our own calculations. We work on our own calculations, our own process, thinking processes, and the best part is in India. It's in Iskcon, I've been here in so many years. When I see a foreign devotee or a foreign student, the best part is they accept everything. And each Indian, he seems to know God more than me. Rather, I am no one. He seems to know God more than anyone else. Even Ved Vyas and Sukdev Goswami se zyada वही भगवान को जानता है। That's the problem. Acceptability becomes less. And add on to that, these symptoms of Janma Aishwarya Shuddhi Shubhi adds as a stumbling block. They become बोलते हैं आपका भक्ति मार्ग में एक रोड़ा बन जाता है। It's a stumbling block. As it is, we don't have an inclination towards God. अगर हो भी गया और इसमें से एक भी चीज आ गया तो प्रॉब्लम। Then now maintain an attitude of gratitude towards God. Now Atma Nikshep and Karpanya. Now what is Atma Nikshep? Atma Nikshep means to see everything we possess as belonging to God. Why we offer to God? We should understand that everything belongs to Him. अगर ये लकड़ा का टेबल है
आपने बोला मैंने मेहनत से पैसा खरीद के मैंने टेबल खरीदा, बट डिड यू मेक द वुड? अगर भगवान ने वुड बनाया नहीं होता तो आप टेबल कहां से बनाए, फर्नीचर कहां से बनाए? सो कहीं ना कहीं भगवान की वजह से सब कुछ। भगवान ने कभी भी कुछ भी चीज बनाने के लिए, अभी पृथ्वी बनाना था एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन भगवान ने किसको फोन किया? एक 5,000 ट्रक मट्टी भेज देना। अगर एक बिल्डर को अगर आप बिल्डिंग बनाना है, बोलेगा 100 ट्रक ईटा भेज दो, कंक्रीट भेज दो, सीमेंट भेजो, ये भेजो, तो भगवान ने कहां से मंगाया मट्टी? डिड ही कॉल अप एनीवेयर एंड से नहीं थोड़ा मट्टी भेज दो, मट्टी चाहिए? तो पानी 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 कहां से आएगा? 10 टैंकर पानी भेज दो, समुद्र भरना है। हाँ, हो सकता है। दैट इज वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। देन कार्पण्यः, then we should give up the pride of even surrender. कई बार ना लोगों को ये घमंड भी हो जाता है, मैं बड़ा भक्त हूं, मालूम, मैं सीनियर भक्त हूं, तुमसे जूनियर हूं। ये घमंड भी नहीं होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट वर्ल्डली पोजीशन का घमंड तो छोड़ दो, प्राइड अबाउट वर्ल्डली पोजीशंस। इवन वन शुड नॉट हैव प्राइड अबाउट स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स आल्सो। संबंध में से प्रभु जी साल में एक बार निर्जला करते हैं सब लोग, मैं 5-6 बार करता हूं, हर एकादशी निर्जला करता हूं। गुड, नाइस, इट इज गुड, यू आर गोइंग क्लोजर टू गॉड, बट वन शुड नेवर बी प्राउड अबाउट। But the minute you are proud, you are dead. Spiritually, you are dead. Because this is what Acharya very clearly say. We should always have some, bhav of humbleness. So this is how Krishnadas was trying to, offer everything to God. Whatever he wanted, he used to offer to God. And from the Leela of Jalebi, what do we understand? जब भगवान को जिलेबी ऑफर करना था तो भगवान ने जिलेबी ले लिया, मतलब क्या हुआ? भाव, ओके, इट इज सेड बाय आचार्यस, इसी को बोलते हैं रस से रास में जाना। व्हाट इज रास लीला? इट वॉज अ डिजायर ऑफ द गोपीज that they should dance with Krishna and Krishna should dance only with her. They never wanted, a group dance. They wanted individually, everyone wanted Krishna to dance with them. So when your desire becomes their desire, your desire matlab devotee's desire becomes God's desire, then what does it become? It becomes rasa. जैसे भगवान कृष्णदास की इच्छा क्या थी? जिलेबी ऑफर करूं भगवान को। वो तो इनकी इच्छा थी, भगवान की तो इच्छा नहीं थी, बट ये इच्छा इतनी प्रबल थी, इतना स्ट्रांग था, दैट इट बिकेम द डिजायर ऑफ लॉर्ड। एंड लॉर्ड सेड, डोंट वरी, आई एम ऑलरेडी हैविंग जिलेबी इन माय हैंड। सो दैट इज व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ गोपीज। द गोपीज हैड सच अ स्ट्रांग डिजायर, such an intense desire of serving the Lord, being intimate with the Lord, that Lord also desired. That is why when you open the Bhagavatam, it says very nicely that Lord, that day, or that evening rather, when he was blowing the flute, he desired. What are we reading about? Atmaramascha Muni. He is Atmaram, one who is self-satisfied. पूरी सृष्टि के पहले कौन था? भगवान थे। पूरी सृष्टि के बाद कौन रहेगा? बिफोर एंड आफ्टर इट इज ओनली गोइंग टू बी गॉड। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? दैट लॉर्ड डजंट हैव द डिजायर, बट द डिवोटी व्हेन ही हैज दैट इंटेंस डिजायर, दैट बिकम्स लॉर्ड्स डिजायर। जैसे कर्माबाई की खिचड़ी, कर्माबाई खिचड़ी बना के खिलाती थी, जैसे दातुन से उसी में हिलाती थी और उसी से दांत भी घासती थी और साफ करती थी और खिचड़ी भी हिला के देती थी। और जगन्नाथ जी वो बड़े भाव से खाते थे, खिलाओ।
रोज सुबह आ जाते थे, खड़े रहते थे। क्यों? जगन्नाथ जी को खाना नहीं मिलता है। मैक्सिमम फूड इज ऑफर टू जगन्नाथ जी है, आज भी क्विंटल्स में ऑफर होता है, बट फिर भी कर्मा भाई की खिचड़ी समथिंग स्पेशल, समथिंग स्पेशल। So that is what is important. Please understand, Lord is just here to see what your bhav is, what your feelings are, how you want to serve God, in which way you want to serve God. Otherwise, Lord is self-sufficient. उसी का तेल, उसी का मतलब भगवान का ही तेल, भगवान का ही आलू, भगवान के बेसन और उसी के पकोड़े बन के आप भगवान को बोलते ले भगवान मैंने बनाया खा लो। आप क्या खिलाए? तो सब कुछ उनका है। I always tell you the joke of the scientist. Once there was a competition between scientist and God. God said, "What you will do? I can do what you can do. I can do." ठीक है, बोला बोला, okay, your turn first. You start. The scientist then he took little mud and water and started making something. The Lord said, "Wait, wait, 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 wait. What happened? Go and get your ingredients and do it." क्या बोला? Go and get your ingredients. ये सब सामग्री तो मेरी है। आज अगर कोई साइंटिस्ट कहता है मैंने ये बनाया वो बनाया, कहां से बनाया? इंग्रेडिएंट्स तेरा सब भगवान का है। तूने घर से क्या, व्हाट हैव यू क्रिएटेड? वी आवरसेल्व्स आर लिविंग ऑन ए लिव ऑन लाइसेंस बॉडी, है ना? किसी का 60 साल का लाइसेंस है तो किसी का 80 साल का है, तो किसी का 20 साल का लाइसेंस है। कोई जल्दी मरता है, कोई लेट मरता है, और ये शरीर छोड़ना पड़ता है। और शरीर छोड़ने के बाद कृमि भस्म बीट, तीन ही है इसका डेस्टिनेशन, इसके अलावा चौथा डेस्टिनेशन नहीं है। या तो जलाया जाएगा तो कीड़े खाएंगे, या तो कोई पेड़ अपना पक्षी खाएंगे और उसका आप विष्टा बनोगे। तो व्हाट इज द स्पेशलिटी, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? बट वी हैव टू अंडरस्टैंड that at all given times, all these ingredients are given by only and only by God. And what is the purpose of giving these ingredients? We have to use them for achieving God. It's like, some competitions happen on TV, Master Chef competition, something of that. Some I can understand, I can correlate easily to make you understand that. So when you go for a master chef, they will ask you, आप क्या बना सकते हो? Let's say you say I want to make cake or pizza. All the ingredients are provided to you. They will see to that no ingredient is short. क्यों? वो जज को देखना है ना भाई, आपका जो भी बनाया, बिस्किट बनाया, पिज्जा बनाया, जो भी बनाया, जो भी आइटम बनाया, वो खा के टेस्ट करेगा अच्छा है कि नहीं, and then he will give you a verdict whether you are first or second or third, whatever it may be. So in this competition, for the competition, he is giving all ingredients. And let's say two contestants make the same product. दो contestant वही पिज्जा बनाते हैं, एग्जाम्पल, अलग अलग इंग्रेडिएंट देंगे क्या? लोग एक ही कॉमन इंग्रेडिएंट कॉमन है, बट व्हाट यू मेक दैट डिसाइड्स योर विनिंग सिचुएशन। सेम वे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी आर पुटिंग आवर एफर्ट्स, it should be only and only to achieve God. All the ingredients given. What are the first ingredient given to us? This body. Then the senses. All that are supposed to be used for the achievement of the supreme goal. But we use everything and senses can never be happy. I'll tell you, I was just discussing with someone. So they're telling that they had gone abroad and there they could not get any food without onion and garlic. It was a tough time for them. And finally the person came back after losing 2 kgs of weight. They've gone to abroad, UK गया के घूम के आए and 2 किलो वजन कम हो गया। क्यों? खाना नहीं मिला। Like what material happiness it is. So how our goal of life is to only get good food. It so happened I had gone once to Vrindavan. I'm telling you about before COVID, 5-6 years before story. I had been to Vrindavan and we had gone for our Chaurasi Kosi Yatra. And
that day our planning went a little haywire, and we reached a place where we were not able to access, we were not having any access to food. It was lunchtime around 2:33, it was almost 3, and that day we didn't have a proper breakfast also, so we were hungry. So I was also in the vehicle. So now what next? फूड तो मिलेगा नहीं. तो कैसे इधर एक जगह गए तो वहां के साधु का खाना हो चुका था. छोटे से बर्तन में इतना सा एक तपेली में थोड़ा सा खिचड़ी बचा, थोड़ा सा खिचड़ी. एंड बोलता मरता खा करता ना क्या ना करता, ऐसा है भूखा क्या ना खाए, सब कुछ खा जाएगा. तो हमको बोला कि आप खाओगे, खिचड़ी है. वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, खिचड़ी मिल रहा है खाने के लिए. तो एंड won't believe a small ladle, है ना, small ladle to serve, serving spoon, and सब लोगों को पत्तल दिया और सबको बिठाया. And the sitting place was also not very posh or something, and one ladle of this thing was given. I mean, heart of heart I was wondering, this one spoon मैं खाऊंगा क्या, सूंघूंगा क्या, उसमें आधा तो हाथ में लग जाएगा, ये मतलब खा लूं क्या. This much, it was only this much. And पेट में चूहे ऐसे कबड्डी खेल रहे. ठीक है. So I put the first morsel in the mouth. I said, इतना ज्यादा दे दिया. Food was not at all palatable. I'm talking from the viewpoint of my senses. It was not palatable. Then I was given to understand this is the food these sadhus eat daily. This is that so-called khichdi which they eat daily. Somehow I finished that off because hunger was one side killing me. But then I was not able to push in more. I mean that उसमें भी बच गया. The best part was we were around 6 or 7 people over there. तो उसमें से एंड में बच भी गया थोड़ा. सब लोग को ऐसा लाइक एक दूसरे को देख के कहाँ यार कहाँ फंस गए, किधर क्या खा रहे. ठीक है. So then we were discussing with the sadhus. So that time the sadhu said, we came to know that deliberately they cook such obnoxious food. Why? There is one of the acharyas say, if the food is made tasty, they will call for dahi, add it to the food and make it distasteful. Roti or puri, if given, they'll dip it in water and then they will eat it. Why? Because his senses, if they get habituated to nice food, कभी नहीं सुधरेंगे. You can never. आज तक हमेशा I give an example. आज 50-60 साल का उम्र का व्यक्ति को पूछ लो, आज तक कितना टन खाना खाया है, क्या तेरी इंद्रियां खुद तृप्त हो गई? दिल मांगे मोर, थोड़ा और मुझे अच्छी पकौड़ी खिला देना. खासकर अगर वो अपनी पत्नी को कहे आज तो कम से कम अच्छा खाना बना के खिलाना. पत्नी बोली 40 साल से शादीशुदा हूं, 40 साल से मैं क्या तुमको घटिया खाना बना रही हूँ कि आज आपके लिए अच्छा खाना बना के खिलाऊं. 40 years I've been making nice food only, but still the tongue wants something better than what you had yesterday night. कल शाम को जो खाया या कल सुबह जो खाया उससे बेहतर खाना जिभा मांग रहा है. तो ये इंद्रियों को कभी खुश नहीं कर सकते. तो they said from the day one we make sure that we don't give very nice palatable food to the tongue, to the senses. अच्छी चीज दोगे तो उस चीज की आदत लग जाए. They don't sleep on a very nice bed. They don't eat very nice palatable dishes. They just eat to survive. We survive to eat. We survive to eat. They eat to survive. ठीक है. Prabhupada's moment is so great. Srila Prabhupada is so great. Okay, Baba, you chant 16 rounds. You do Bhagavan ka kirtan and have varieties of prasad. You got 7-8 varieties of canteens over here. We got Govindas, we got Bliss store, we got sweet shop, we got a cake bakery, we got DT kitchen, we got Brahmacharya Prasad Ashram, this, that, so many variety. खाओ, कुछ भी करो और भक्ति. और हम लोग ये सब खा पी के भी
भक्ति नेक्स्ट वीक करते हैं. We are habitual to procrastinate. Some people only walk in for pressure. So that's the thing, tragedy. So these are the 6 symptoms given in the Haribhakta Vilas, and it says Anukuliya Sankalpa Pratikula Svirjanam. So what does this mean? Anukuliya Sankalpa Pratikula, accepting what is favorable for God and rejecting what is not favorable for God or for devotion. See, these choices are very difficult to make. These choices are very difficult to make. You may think it's, चलो बोलना तो आसान है, प्रैक्टिकली जीवन में लाना मुश्किल है. That is why let this be very clear to all of us. भाई जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री, ये सब अगर किसी के पास है, what does Lord say in the Bhagavad Gita? मतस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च. From me comes स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च. आपके अंदर याददाश्त अगर है तो वो भी, एंड अगर आपके अंदर स्मृति है, भूल भी जाते हो तो मेरे वजह से है, एंड ज्ञान भी मेरे वजह से है. अगर कोई बच्चा अगर रट भी लेता है और एग्जामिनेशन हॉल में पीटता है अपना सिर, आता नहीं, इधर ये निकल नहीं रहे, भाई दैट इज ऑल्सो कृष्णा. और इज सेइंग मत स्मृति, वहां जाके बराबर, हाँ मुझे याद है, सुना था, या नो किसी से 2 स्टूडेंट्स बात कर रहे तब सुन लिया था, वो आंसर लिख देता, वो लिख देता, एंड he is able to write, or he may have real knowledge about the subject matter, you can also write. But last but not the least, if he forgets, even that is because of. So if someone writes a good answer paper and he gets good marks, मैंने किया या मेरे वजह से हुआ, उसका बिजनेस अच्छा चला मेरे वजह से हुआ, भाई आपके कर्म थे, हुए. बट इन अचीविंग इट you have exhausted something very very valuable, and that is karmas. तो जैसे दुख आपके बुरे कर्म की वजह से है, सुख भी आपके अच्छे कर्म की वजह से. और जब जब सुख मिल रहा है ना, तब तक सोच लेना कि आपके अच्छे कर्म बहुत जल्दी अकाउंट में जीरो बैलेंस, जीरो रहने वाला. तो बेटर ना अच्छे कर्म के पीछे भागो, ना बुरे कर्म के पीछे भागो. भागो तो सिर्फ भगवान के नाम के पीछे. बस भगवान का नाम लेने से क्या फायदा है? व्हाट डज लॉर्ड से? यस माता जी, LIC बोलिए, क्या है आप लोगों का स्लोगन, क्या है? नहीं नहीं, वो जीवन के बात नहीं है. वो घर वाले को पूछता है, आपसे पूछता है. व्हाट इज द स्लोगन ऑफ योर्स? योगक्षेमं वहाम्यहम्. So what does that mean? योगक्षेमं अनन्या चिंतस्माम ये जन परिपश्यते तेषां नित्यम अभियुक्तम योगक्षेमं वहाम्यहम्. So Lord clearly says, भाई जो आपके पास है I will protect, and जो चीज की कमी है वो मैं आपको दूंगा. And that could be seen very clearly when Draupadi was in problem, when Durvasa Muni came with his 80,000 disciples. भाई अब क्या अगर इज्जत कैसे रह जाए? द्वीप क्रीड़ा में जब हार गए एंड द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तभी किसने बचाया? भगवान. तो अगर इफ यू आर ए सरेंडर्ड सोल, आप अगर शरणागत हो, विभीषण शरणागत हो गया, उसको क्या मिला? राज्य में मिला और भगवान की भक्ति मिली. बट पहले क्या किया? भक्ति की. पहले राज्य तो बाद में भक्ति कर रहे हैं, वो हिसाब नहीं लगा है. मगर आजकल हम लोग कैसे है, पहला हिसाब से नहीं, पहला कुछ करो, बाद में हम सोचेंगे उसके बारे में. और उसमें भी तर्क लगाते हैं कैसे उसको भगवान को चीट करना है. और ये समझते हैं, ये वी डोंट अंडरस्टैंड दैट वी कांट चीट गॉड बिकॉज़ ही इज द बिगेस्ट चीटर. उनसे बड़ा चीटर इस पूरा ब्रह्मांड में कोई नहीं. इसके लिए हम लोग, इफ यू आर टेढ़ा, ही इज त्रिभंगी, 3 टाइम टेढ़े हैं भाई आपसे. अगर आप थोड़े टेढ़े हो तो भगवान 3 गुना टेढ़े हैं आपसे. तो प्लीज वी डोंट ट्राई टू प्ले
games with God. Rather, approach God in a humble mood, no problem. I'll tell you one story about Jagannath ji. There was once a devotee in Jagannath Puri. Very nice devotee, very staunch devotee, sincere devotee. But उसके अंदर एक बुरी बात थी भौतिक दुनिया की दृष्टि से. And वो क्या था? He was attracted to one prostitute. And he used to daily go and visit. After the Lord would sleep, he would go and visit that prostitute. He was a panda. भगवान का पंडा था, but he would go and visit that prostitute. It so happened that next day was Rath Yatra, Jagannath ji ka Rath Yatra. And the earlier day, he was attracted towards her. Though he was doing all the seva in the temple, that day night he said, let me go and spend with her. He spent that night, and next day early morning he was supposed to be, there is a function called Pandi. Pandi नाम का एक फंक्शन रहता है जहां पे जगन्नाथ जी को लेके रथ तक लेके आते हैं. वो भी एक देखने लायक है. जगन्नाथ जी की हर लीला देखने लायक ही होती है. तो पांडी देख था, बट ही वॉज इन हर लैप, स्लीपिंग इन हर लैप. When Jagannath ji was put in the Ratha, he remembered, oh my God, today is Rath Yatra, मैं अभी तक गया ही नहीं. He got up and ran towards the Ratha. He didn't even take his bath. In an unclean way he was going. But news spreads faster than anything else. All the pandas came to know that this fellow is coming from that prostitute's house. They all thrashed him. You idiot, so unclean, you're coming from there, you're calling yourself a devotee, this is right. So, don't think that this is also a type of thing which you all should ever practice. But Lord says, अपि सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाव साधुरेव सर्व मंतव्य समग्र व्यवस्थित ही सता. It says, Lord says in the Bhagavad Gita, अपि सुदुराचार, सबसे बड़ा दुराचार, अपि सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाव साधुरेव सर्व मंतव्य, उसको साधु ही मानते, समग्र व्यवस्थित ही सता. क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन तो है प्रतिजाने नामे भक्त्या प्रणश्यति. He says, Kaunteya, Arjuna, say, declare, my devotees will never perish. And why did he ask Arjuna to say? He could have said himself, no, Kaunteya pratijani, tu bol. Why did he say that? Because he would Break his vow. He will break his vow. What was the vow he had taken in the Mahabharata युद्ध? मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा. बट भीष्म पिता ने क्या बोला? आज ऐसे युद्ध लड़ूंगा कि उनको अपना अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा. उन्होंने बोला छोड़ो, मेरा my vow is not important. भीष्म पितामह इज ए महाजना, उनका जो शपथ है वो पूरा मैं करूंगा. वो उठा अस्त्र उठा के रथ का पैया उठा के भागने लगी. इसके लिए इसे अर्जुना यू से, क्योंकि एक बार तेरा बात रखने के लिए मैं मेरे भक्तों को कभी प्रणश्यति नहीं होने. बट दीज पीपल thrashed him nicely. He went and sat near the sea thinking, अरे मैंने कितना गलत पाप किया. I'm deprived of your ratha and going on the top of the ratha and all that. And वहां पे जगन्नाथ जी रथ यात्रा में हिलने का नाम नहीं ले रहे. एंड दिस हैज हैपेंड इवन टू दिस डे. इट हैपेंस. एक पूरा दिन में जस्ट अ स्मॉल डिस्टेंस, इट्स नॉट अ वेरी बिग लॉन्ग डिस्टेंस. हम हैव गॉन टू सी द रथ यात्रा. once you all should go once. It's a very short distance, it's not a big distance. I mean, comparatively the ratha itself is so big, huge, but Lord ऐसे चलते चलते रुक जाएंगे. You pull, you do anything, Lord will not go. बलदेव और सुभद्रा आगे पहुंचेंगे जगन्नाथ जी के लिए. आज भी होता है ये. तो जगन्नाथ जी हिले नहीं, सब लगाया, भगवान को भोग चढ़ाया, ये किया वो किया, भगवान हिलने को टस से मस नहीं हो रहे. फिर फाइनली द पांडास को जाके जगन्नाथ जी ने बोला कि भाई
you have beaten a devotee of mine. You get him here, then I will move. So finally that devotee was brought back with all due respect. He prayed to God, fell at his feet, and finally Lord moved. So this is wow, Lord is very, very merciful. So we all have a past. Might be a bad past, a dirty past, a sinful past. But the best part of God is He forgives. He may not forget, but He forgives for sure. वो भूल जाते, जाने दो, छोड़ देते. And that is the quality of God. We never forgive. We always keep in the corner of the mind. मारा था ना मेरे को, बोला था ना ऐसा, छोड़ूंगा नहीं, कभी ना कभी तो बदला लूंगा. But that is the specialty of God. He merciful. That is why हम लोग क्यों बोलते भगवान is merciful. What is it merciful? कि भाई we are, हमारी लायकियत नहीं है, फिर भी हम पे कृपा करते हैं. इसी का कृपा का अर्थ है. कृपा का अर्थ क्या है? हम भगवान एकादशी किया है, चलो अभी द्वादशी का अच्छा फीस खिलाओ. अरे आपने किया, अगर एकादशी कर भी दिया तो भी उनकी कृपा से किया. अगर उनकी कृपा ना होती तो वो भी नहीं करते. That is why we should always be surrendered to God at all times. And of course, Kunti Maharani is going to further say many more things which we will discuss in the coming lecture. With this, we like to close today's lecture because already it's 8:45. We all have to leave, so quite late. Hare Krishna. Anybody has got any doubts, questions, can ask.